कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमशमेव। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी, जले अस्मिन् सन्धिं कुरु। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित जम्बुफल चारुभक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूत हितार्थाय वसुसृष्टिं सदा कुरुन्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधिर्यान् गम्यं, वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुज्वनकृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। जपाकुसुम संकाशं द्विभुजं पद्महस्तकं, सिन्दूरावरमाल्यं च रक्तगन्धानुलेपनं, माणिक्यरत्नखचित सर्वाभरणभूषितं, सप्ताश्वरथवाहं तु मेरुं चैव प्रदक्षिणं, देवासुरवरैर्वन्द्यं गृणिभिः परिसेवितं, ध्यायेत् पठेत् स्वर्णाभं सूर्यस्य कवचं मुदा। गृणिः पातु शिरोदेशे, सूर्यः पातु ललाटकम्, आदित्यो लोचने पातु, श्रुति पातु दिवाकरः, घ्राणं पातु सदा भानुः, मुखं पातु सदा रविः, जिह्वां पातु जगन्नेत्रः, कण्ठं पातु विभावसुः, स्कन्दो गृहपतिः पातु, भुजो पातु प्रभाकरः, क्रावच्चकरः पातु, हृदयं पातु नभोमणि, द्वादशात्मा कटिं पातु, सविता पातु सक्थिनी, उरु पातु सुरश्रेष्ठो, जानुनी पातु भास्करः, जंगे में पातु मार्तंडो,
गुल्फो पातु त्विषाम्पतिः पादोदिन्मणिः पातु पातु मित्रोऽखिलं वपु आदित्यकवचं पुण्यं भेद्यं वज्रसन्निभं सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत् अशेष रोग शान्त्यर्थं ध्यायेदादित्यमण्डलम् अनेक रत्न संयुक्तं स्वर्णमाणिकाय भूषणं कल्पवृक्ष समाकीर्णं कदम्ब कुसुम प्रियं सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्ण रत्नाभरणाय तुभ्यं पद्मादिनेत्रे च सुपङ्कजाय धर्मेन्द्र नारायण शंकराय समरक्त चूर्णं ससुवर्ण तोयं सकुकुमाभं सकुशं सुपुष्पं प्रदत्तमादाय च हेमपात्रे प्रशस्तनादं भगवन् प्रसीद तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम् येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्म फलादः तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रिय मंत्रिणे जानकी शोक नाशाय आंजनेयाय मंगलम मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मण प्राणदात्रे च आंजनेयाय मंगलम महाबलाय शांताय दुर्दंडी बंधमोचन मैरावन विनाशाय आंजनेयाय मंगलम पर्वतायुधहस्ताय राक्षसाय कुल विनाशिने श्री राम पाद भक्ताय आंजनेयाय मंगलम विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्ति स्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु आंजनेयाय मंगलम दीर्घबालाय कालाय लंकापुर विदारिणे
लंकिनी दर्पनाशाय आंजनेयाय मंगलम। नमस्ते अस्तु ब्रह्मचारिण नमस्ते वायुनंदन नमस्ते गानलोलाय आंजनेयाय मंगलम। प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय आंजनेयाय मंगलम। आंजनेयाष्टकमिदं यः पठेत सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्। देवी उवाच धनदाया महाविद्या कथिता न प्रकाशिता इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम्। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं मन्त्रविग्रहं सारतरं देवी कवचं मन्मुखोदितम्। धनदा कवचस्यास्य कुबेर ऋषिरीरितः पंक्तिश्छन्दो देवता च धनदा सिद्धिदा सदा। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः धम बीजं मे शिरः पातु हिम बीज मे ललाटकम् श्रीबीजं मे मुखं पातु रकारं हृदिमेव तु तीकारं पातु जठरं प्रीकारं पृष्ठतोऽवतु येकारं यङ्योर्युग्मे स्वाकारं पादयोर्युगे शीर्षादिपादपर्यन्तम् आकारं सर्वतोऽवतु। इत्येतत् कथितं कान्ते कवचं सर्वसिद्धिदम् गुरुभ्यर्च्य विधिवत् कवचं परपठेद्यति शतवर्षसहस्राणां पूज्यः फलमाप्नुयात् गुरुपूजां विना देवी न हि सिद्धिः प्रजायते। गुरुपूजात् परो भूत्वा कवचं परपठेत् ततः सर्वसिद्धियुतो भूत्वा विचरेद् भैरवो यदा। प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रजापपुरःसरं सोऽभीष्टुलमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। पूजा काले पठेद्यस्तु देवीं ध्यात्वा हृदयम्बुजे षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धिर्नात्र कार्यविचारणा। सायंकाले पठेद्यस्तु स शिवो नात्र संशयः। भुजं विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयद्यदि पुरुषो दक्षिणे बाहो जोषिद्वाम भुजे तथा मा सर्वसिद्धियुति भूत्वा धनवान् पुत्रवान् भवेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद् धनधाम शुभे शस्त्रघातमवाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। कवचेनावृतो नित्यं यो हि यत्रैव गच्छति तत्रैव स महादेवी सम्पूज्यो नात्र संशयः।